OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your chemistry class and today we are going to start a new chapter, that is air around us. You can feel the air everywhere because air is present everywhere. If you will say that, ma'am, I cannot see the air, and that is true. You cannot see the air but you can feel it. How will you feel it? Whenever the air is blowing, it touches your face and you can feel that air. In fact, this is a hand fan and you can see the wings are rotating and thus you can feel the air. You can feel the air even in the aircrafts. The aircrafts are flying because of the air. And whenever you fly the kite also flies in the sky because of the presence of air. Plus, the parachute also goes up in the air because there is air. Without air, parachute cannot go up into the sky, right? Next, the clothes. Your mother used to dry your clothes on the roof, right? And why these clothes get dried up? Because of the presence of the air. And in fact, you can see the trees, they are wailing in and out, or the trees that are moving in and out because of the presence of the air. So here you can say that air is present everywhere. Although you cannot see the air, but you can definitely feel it, right? Next, if we talk about the air around us, the next example is this paper firki, right? You can see this paper firki is moving. Why it is moving? Because of the presence of air. In fact, the weathercock, if we talk about the weathercock, this weathercock rotates in the direction of the wind and thus it shows that air is present around us, right? Now, if we talk about the air, so what is air now? Air is a mixture of different gases. And what type of gases are those? Those are nitrogen, oxygen, carbon dioxide and some other gases are present. In the largest quantity, there is nitrogen gas. Then on the second number, there is oxygen gas, then on the third number there is carbon dioxide and there are least amount of other gases present in the air. Okay, now if we talk about the wind, what is wind and what is the difference between air and wind? Wind ये हम तब कहते हैं जबकि हवा बहुत तेज चल रही है. Whenever air is in motion we call it wind. Okay, so एयर अगर बहुत तेज तेज चल रही है तो हम कहते हैं कि हवा चल रही है या आंधी तूफान जब आता है तो वी कॉल इट विंड. वेयर एज अगर एयर जो है अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रही है देन वी कॉल इट एयर, राइट? Next, if we talk about the properties of air, so air is colorless as you cannot see anywhere, right? It is colorless, it has no color, no taste, okay? Next is it is transparent. We can see through it. You can see me right now. You can see to your phone. You can see to your laptop. You can see your friend. And that doesn't mean that air is not present between you and your friend. Air is transparent and you can see through it, right? Any material by which you can see through that material. Any material through which you can see is known as transparent, and because air, by the air you can see through the air, so it is also transparent. Okay. Next, if we talk about another property of air, that is air occupies space. Okay, what air does? It occupies space. Whenever you fill the air or whenever the container is empty, just like in the given picture, there is a empty glass, but is it actually empty? Is it really empty or it is filled with the air? Okay, so because air is colorless, you cannot see the air, right? In fact, you cannot touch the air. So because air is colorless, so it seems that this glass is empty, but actually it is full. It is full of
air. So air occupies space. Okay, now let me tell you an activity or let me tell you an experiment that shows that air occupies space, right? Next, अगर हम यहाँ पे बात करें, so we have taken a cotton wool in the glass. Okay, कॉटन वूल हमने क्यों लिया है? बिकॉज अगर वाटर कॉटन वूल में जाएगा वो गीला हो जाएगा. नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव इन्वर्टेड द ग्लास इनटू द वाटर टब एंड वी हैव सीन कि ये जो ग्लास है उसके अंदर पानी जा ही नहीं रहा है. ठीक है, तो पानी क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज द ग्लास इज फुल ऑफ व्हाट? एयर. बिकॉज द ग्लास इज फुल ऑफ एयर. इसी वजह से, क्योंकि एयर ने स्पेस ले रखी है, तो पानी जो है ग्लास के अंदर नहीं जा पा रहा है. इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट टिल्टेड द ग्लास अ लिटिल. सो व्हाट हैपेंस, यू कैन सी द बबल्स गोइंग आउट ऑफ द ग्लास. तो ये जो बबल्स हैं, दीज आर द बबल्स ऑफ द एयर. और जैसे जैसे बबल्स निकल रहे हैं वैसे वैसे ग्लास के अंदर पानी भी चलता चला जा रहा है, अंदर जाता जा रहा है. So this experiment shows that air occupies space, right? Next, if we will talk about, we will say the next property is air has mass. Okay, तो air has mass, इसको कैसे जो है हम by experiment prove करेंगे. So what we have taken here, we have taken two inflated balloons. Okay, and then What happens, हमने एक स्टिक से दो बलून्स को, दोनों फूले हुए हैं, दोनों में हवा भरी हुई है, दो बलून्स को जो है हमने दोनों कोनों पे बांध दिया है. अब क्या करना है? अब वी विल सी कि जो स्टिक है वो हिल ज़्यादा नहीं रही है, वो लगभग नॉर्मल है. देन इन द सेकेंड स्टेप व्हाट वी हैव डन, इन द सेकेंड स्टेप हमने एक बलून को डिफ्लेट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल कि हमने ब्लू वाले बलून को डिफ्लेट कर दिया, तो ब्लू वाले बलून को डिफ्लेट करते ही हमें क्या समझ में आया कि जो रेड वाला बलून था स्केल उसकी तरफ झुक गया. दैट मीन्स रेड वाले बलून में कुछ मास होना चाहिए था, कुछ वेट होना चाहिए था, तभी तो स्केल उसकी तरफ झुक गया. अब रेड वाले बलून के अंदर तो एयर के अलावा कुछ था ही नहीं. दैट मीन्स दिस implies that air also has some mass. Okay, next क्या है? next we will talk about the air exerts pressure. जो next property है air की, that is air exerts pressure in all the directions. एयर को आप जिस भी कंटेनर में बंद करके रखेंगे, whether it is a glass jar, whether it is a balloon or anything else, जो एयर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, they continuously exerts pressure, मतलब प्रेशर लगाते हैं on the wall of the container. as you can see in the given video कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो एयर के पार्टिकल्स हैं, वो इस गोल से बलून के अंदर ट्रैप्ड है और वो पार्टिकल्स बलून के वॉल पर कॉन्टिन्यूसली प्रेशर लगा रहे हैं. ओके, सो एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में लग रहा है. दिस इज व्हाई इट इज सेड दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस, राइट? नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर क्या है? जो हमारी अर्थ है, that is been enveloped by the air, or we can say by the layer of the air, which we call it atmosphere. Okay, you can see the earth here, you can see in the given diagram, there is earth, then there is first layer known as troposphere, then stratosphere, then mesosphere, thermosphere, exosphere. तो ये क्या है? ये है different layers of the air. ओके, एंड ये जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एयर हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. ओके, दिस एटमॉस्फेयर इज मेड बाय द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, राइट? नेक्स्ट क्या है? आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ एयर. ठीक है, मैंने कहा आपको कि अर्थ जो है हमारी थिन लेयर से, किसकी लेयर से? एयर की लेयर से पूरी तरफ से ढकी हुई है. और ये जो लेयर है वो बहुत सेवरल किलोमीटर्स तक चलती है. ठीक है, और इस लेयर को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस इन डिटेल, तो आप ये देख सकते हैं दैट एयर जो है, जो अर्थ है, उस पे पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर, दैट इज
20 kilometers. And next, stratosphere 50 kilometers. Mesosphere 85 kilometers, thermosphere 690 kilometers, exosphere 10,000 kilometers. You can see ये जो air है इसने envelop कर रखा है हमारी अर्थ को, just like this, okay? इसने चारों तरफ से घेर के रखा है और ये बहुत 10,000 किलोमीटर तक हमारी एयर को एनवेलप करके रखती है, ओके? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. अभी हमें ये समझ में आ गया कि एयर क्या है, हमें ये भी समझ में आ गया कि एयर जो है वो हमारी अर्थ को चारों तरफ से ढक के रखती है, एक एनवेलप की तरह है, ठीक है? और सेवरल किलोमीटर्स तक वो एयर की लेयर जाती है. तो अब हम बात करेंगे कि कॉम्पोजिशन ऑफ एयर क्या है, एयर किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है. एयर एक्चुअली में सिर्फ एक कंपोनेंट से नहीं बल्कि उसका पूरा मिक्सचर है, ठीक है? एयर इज अ मिक्सचर of different substances. If we talk about those substances can be different gases, it can be water vapor and also the dust particles. The gases in the air are mainly nitrogen. अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन कौन सी gases हैं, I told you that there are different gases, but if I talk about the what are those different types of gases, so it is nitrogen, oxygen, there is small amount of carbon dioxide and there are also some other gases, okay? So जो maximum composition है या जो maximum amount में जो हमारे गैस प्रेजेंट है दैट इज नाइट्रोजन. सबसे ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अप्रोक्सीमेटली 78%, ओके? एंड इफ वी टॉक अबाउट द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे आती है. ऑक्सीजन नाइट्रोजन के क्वांटिटी से कम है, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे आती है, दैट इज अराउंड 21%. और जो थोड़ी अदर गैसेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करती है अदर 1%, ओके? नाउ इफ वी टॉक अबाउट द वाटर वेपर्स, ठीक है? सिर्फ गैसेस ही नहीं बल्कि वाटर वेपर भी जो है वो हमारी एयर में प्रेजेंट होता है. एक्चुअली ये वाटर वेपर आता कहाँ से? जो भी हमारे वाटर बॉडीज हैं, फॉर एग्जाम्पल द रिवर्स, द पॉन्ड्स, लेक्स, सीज, ठीक है? तो यहाँ से क्या होता है, जब भी सनलाइट उन पे पड़ती है, दिस वाटर गेट वार्म्स अप एंड चेंज इनटू द वेपर, okay? Water is in the liquid state. When water is heated up, it changes into the gaseous state. That means water changes into water vapor, okay? So this is also the constituent of the air. Water vapor is also present in the air and the amount of water vapor is different in different locations. जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और पानी भी बहुत ज्यादा होगा, वहां पे वाटर वेपर का कंटेंट जो है बढ़ जाएगा, ठीक है? अगर गर्मी कम होगी, ठीक है, तो वाटर वेपर का कंटेंट घट जाएगा, ओके? तो at normal temperature, like for example suppose 30 degrees Celsius, around 4% of water vapor is present in the air, right? Next, if we talk about the dust particles are also the constituents of air, okay? और dust particles जो हैं वो air pollution की वजह से आते हैं, that are present in the air. Dust particles का भी जो amount होता है that can vary from place to place. एक जगह पे dust particles का amount कम हो सकता है, जहाँ पे pollution कम होगा, जहाँ पे साफ सफाई होगी, वहाँ पे एयर में डस्ट पार्टिकल्स कम पाए जाएंगे. वेयर एज इन अनदर प्लेस देयर इज मोर पोल्यूशन, ठीक है, वहाँ पे साफ सफाई नहीं हो रही है, तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स का अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है? तो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो जो प्रेजेंस है डस्ट पार्टिकल्स की, दैट कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट? नेक्स्ट इफ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड, the another type of constituent of air is oxygen, that is very much important for us as well as the plants and animals, okay? This is the component of air and we know it by the name of oxygen.
This is very very important. It plays a vital role in our life because without oxygen we cannot survive, right? हम जिंदा ही नहीं रह सकते. So oxygen is very much necessary, very very necessary for our survival, for the survival of all the living beings, whether they are humans, whether they are plants, whether they are animals, right? And if we talk about the composition of oxygen कि वो कितने परसेंटेज में है, then it is around 20.95% और approximately 21% ऑक्सीजन हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में है. एंड अगेन ऑक्सीजन का लेवल भी घटता बढ़ता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस. ठीक है, अगर आप पहाड़ी इलाके में चले जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाएगा, वेयर एज अगर आप प्लेन्स के एरिया में आएंगे तो ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज नाइट्रोजन. एज आई सेड कि नाइट्रोजन इज दैट गैस दैट इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम अमाउंट. सबसे ज्यादा एयर में अगर कोई गैस प्रेजेंट है दैट इज नाइट्रोजन and its percentage is 78.11%. okay, and nitrogen is also very very important for the plants and as well as for the animals. It is a non supporting gas for combustion. ठीक है, nitrogen is a non supporting gas for combustion as it does not helps in burning, whereas if we talk about the oxygen, oxygen helps in burning but nitrogen doesn't helps in बर्निंग. ओके, अगर कोई चीज बर्न हो रही होगी तो नाइट्रोजन जो है उस चीज को बुझा देगी, whereas oxygen will help something to burn. Okay, the next type of gas which is present in the atmosphere is the carbon dioxide gas, but it is present in very minute quantity, that is 0.03%. okay, but if this carbon dioxide exceeds this limit, we feel suffocation. okay, whenever we feel suffocation in the room, that means the percentage of carbon dioxide is increasing in that room. okay, अगर आप एक रूम में बैठे हैं, बंद है, कहीं से वेंटिलेशन नहीं है, खिड़की नहीं है, कोई हवा नहीं आ रही है, तो eventually after some time you will feel to suffocate or you will started to feel suffocation. okay, तो ये सफोकेशन क्यों होते हैं? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है. ओके, ऑल मटेरियल्स, जब भी आप किसी चीज को बर्न करते हैं then it will consume the oxygen. Why it will consume the oxygen? Because oxygen is a supporter of combustion. Oxygen helps in burning. So whenever we burn anything, oxygen will be consumed and in return carbon dioxide will be produced. okay, so whenever we burn anything, what will be consumed? Oxygen will be consumed. What will be evolved? Which gas will be evolved? कौन सी गैस निकलेगी? That is carbon dioxide. okay, and it is also produced along with water vapor during respiration. Whenever we inhale, okay, जब हम सांस अंदर लेते हैं, what we inhale the oxygen. और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, यानी कि जब हम एक्सहेल करते हैं, तो क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमारे अंदर से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है. ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज हेल्पफुल फॉर प्लांट्स. हाउ इट इज हेल्पफुल? बिकॉज plants take up the carbon dioxide to do the process of photosynthesis, because plants take in the carbon dioxide to do the process of photosynthesis. By the help of photosynthesis they prepare their own food. okay, we have studied in the first chapter that plants can make their own food and hence they are known as autotrophs, right? So what they need to produce the food? They need a gas, that is carbon dioxide. okay, now if we talk about the atmospheric carbon dioxide, carbon dioxide is generally harmful for us as carbon dioxide gas concentration is continuously increasing in our atmosphere and hence it is causing the air pollution as well as the greenhouse effect. As you can see from the factories, from our houses, from the human respiration, from the combustion of fuels, जो हम गाड़ियां चलाते हैं उसमें जो पेट्रोल डलता है, उसके बाद जब वो पेट्रोल से गाड़ी से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है. और ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलती है? जाके एटमॉस्फेयर में.
so that is why we call it atmospheric carbon dioxide. ये carbon dioxide कौन take up करता है? Plants take up करते हैं to produce their food. But अब क्या है आज के सिनेरियो में व्हाट इज हैपनिंग कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो 0.03% हम कहते हैं कि होना चाहिए, दैट इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल व्हाट हैपेंस, देयर इज एयर पोल्यूशन एंड different types of harm it is causing to our nature. Okay, so that is all for today's session. I hope आपको ये पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा. In the next session we gonna study further this chapter, so stay tuned. Until then, take care, bye bye.